मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो अपना कैमरा ऑन करो, जिसको आवाज आ रही है तो कैमरा ऑन करो सभी। So let us start from where we left. कैमरा ऑन। वालेकुम सलाम। ओके, कल हमने वो किया था कॉम्प्लीमेंट ऑर्थोगोनैलिटी से रिलेटेड ना, कुछ शुरू किया था हमने ऑर्थोगोनैलिटी का आइडिया, that we say that two vectors in a normal linear space are orthogonal if and only if their inner product is zero. So that's what we did. उसके साथ कुछ properties फिर जिसको हम कहते हैं orthogonal complements की. So let me start from there. Cameras on रखो. And let me start sharing the screen. Okay. वो ये था. ओके, तो हम बात कर रहे थे जैसे perp की, है ना? You've got S perp, जो मैंने कहा था कि these are all, so S is a subset, S is some subset. Let me edit them. S is subset H, where H is a Hilbert space. So I can think of S perp as all Y's belonging to H, such that they are orthogonal to every X belonging to S. फिर हमने इन पर्प्स की कुछ प्रॉपर्टीज की, तो मैंने कहा था हमारा गोल है, हम दिखाना चाहते हैं हिल्बर्ट स्पेस को हम लिख सकते हैं हम as M direct sum M perp, a version of projection theorem for Hilbert spaces, where of course M is a closed subspace of H, any closed subspace. ओके, तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे एक थ्योरम से, वो ये है कि let me write it down. थ्योरम ये है, so let M be a closed subspace of a Hilbert space H and let X be vector belonging to the, I should have written proper subspace, but that is clearly evident when I write H minus M. So X does not belong to H, X belongs to H but not M. So it lies outside M. And let D be equal to the distance of X from M, which we denote by infimum of the norm of X minus Y, where Y ranges over M, such that Y belongs to M. मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर लिया X which lies outside M, मान लो ये एक सबस्पेस है, ठीक है ना? अब मैंने हर एक वेक्टर से जो इस सबस्पेस में है, जो कि इन्फिनिटली मेनी होंगे, उसकी डिस्टेंसेस को मेजर किया, और जो सबसे छोटे वाली डिस्टेंस है जो उसका इन्फिमम है उन लेंथ्स का, यानी लेंथ ऑफ दीज वेक्टर्स, अगर तुम ऐसे सोचो तो उसका नाम, उसको मैंने D से डिनोट किया, और आई कॉल इट डिस्टेंस फ्रॉम दैट सेट टू द सबस्पेस, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस among the distances from vector X to all the vectors of M.
तो हम ये कहना चाहते हैं then there exists a unique vector y naught belonging to M under which this infimum is attained. That is such that look, this infimum is attained for some y belonging to M. That means such that x minus y naught is exactly equal to t. इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं, वो जो हमने किया था कॉन्वेक्स सेट के लिए वही हम यहाँ भी करेंगे. तो उसके लिए प्रूफ. Now let C be equal to the set x plus m. यानी x plus m जब हम लिखते हैं वेक्टर स्पेसेस में तो x plus m का मतलब होता है all vectors of the type x plus y such that y belongs to m. Now it's a translate of m. So first thing is that x plus m is a closed convex subset of H. तो अब इसके मतलब let me write it down. तो क्लोज इसलिए होगा because M is closed and X and vector S and translation is a homeomorphism. Translation by a vector is a homeomorphism being an isometry. So it's an isometry, therefore a homeomorphism, which implies that अगर M closed है तो X plus M is also closed, because a homeomorphism would send a closed set to a closed set is also closed. और convex तो तुम verify कर सकते हो. तो verify करने का मतलब suppose Z1 Z2 belongs to X plus M implies that Z1 plus मैंने क्या लिखा? Z1 then can be written as X plus Y1 and Z2 then can be written as X plus Y2 where Y1 Y2 belong to my subspace M. चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ पूरा. So alpha times Z1 plus 1 minus alpha times Z2 would be then alpha into X plus Y1 plus 1 minus alpha into X plus Y2. Now that can be written as, that would be alpha X plus alpha Y1 और क्या आएगा plus X plus Y2 minus alpha X minus alpha Y2. तो थोड़ा अगर हम हिसाब करें तो alpha X कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल करेगी नहीं. वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. I have to show that this belongs to okay. तो हमारे पास बचेगा खाली x, वही है ये और ये कैंसिल. सो अगर मैं इसको अब यहाँ पे रब करूँ तो नहीं, रब नहीं करना चाहिए. यहाँ जाएंगे लेफ्ट से, उर्दू की तरह इसको लिखेंगे दाएं से बाएं. So that means alpha times Z1 plus alpha 1 minus alpha times Z2 is equal to x plus what is this alpha y1 plus 1 minus alpha. I hope मैंने ठीक किया हो लेकिन but this is straightforward. अब ये जो वेक्टर है it is y, it belongs to M. Why? Because y1 and y2 belong to M. Any combination of scalars, if I limit alpha lying between 0 and 1, so this belongs to M. So it is of the type x plus y, where y belongs to M. So this also belongs to x plus M. So x plus M जो है ये convex है, because convex set का मतलब होता है कि let me go to the, मैं इसको रब करूँगा, ठीक है. तो मेरे कहने का मतलब है क्लोज तो है obvious reasons,
Convex भी just can easily verify. Verify क्या करना है? If Z1, Z2 belongs to X plus M, then alpha Z1 plus 1 minus alpha Z2 also belongs to X plus M for all alpha lying between 0 and 1. So that's done. So it's a closed convex set, right? And D जो है, then D is equal to, D क्या है? Let D, ऐसे मैं करता हूँ, let D be the distance from the origin to C, right? So it is distance from origin to the C, to make a carrot to C, that would be norm of X plus Y type, है ना? Should I write it like this? चलो ऐसे में लिखता हूँ. ये मैं रब करता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको इजी बनाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए. Then D is equal to, मैंने, okay चलो कोई बात नहीं, infimum of X plus Y such that Y belongs to M, right? मुझे यहाँ infimum बनना चाहिए, जरा ये बदल गया, कोई बात नहीं, मुझे लगता ठीक ही है. Infimum of this set is the same as infimum of norm of X minus Y. चलो Y लिखते हैं यहाँ पे. चलो मैं इसे लिखता हूँ X minus Y. It is the same thing as Y. That's true because M is a subspace. So if Y belongs to M, if and only if minus Y belongs to M, because it's closed with respect to scalar multiplication. Because D is in front of this, it is equal to this, which is the length of the smallest vector of X plus M equal to C. तो ये जो convex set का smallest vector की length यही होगी. So which implies by previous theorem we have done that there exists a unique vector Z0 belonging to C equal to X plus M such that norm of Z0 is equal to T. जब हमने किया था every closed convex subset of a Hilbert space contains the vector of smallest norm. So वो Z0 है, but Z0 belongs to X plus M implies that Z0 is equal to X plus Y0 for some Y0 belonging to M. Therefore, there exists a unique Y0 such that norm of X minus Z0, Z minus X0 is equal to norm of, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, कहाँ गया मेरा रबर, such that Y0 is equal to Z0 minus X, where Z0 minus X, which belongs to, या X मैंने क्या लिखा, Y0 is equal to, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, this belongs to M, and norm of X minus Y0
is equal to norm of z naught is equal to t। अब सही है, अब हमने इसको ऐसे किया। ओके, मतलब यूनिकनेस एक्चुअली फॉलोज फ्रॉम द यूनिकनेस ऑफ z naught, बट यूनिक के बजाय हम इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। There exists a y naught. Now the uniqueness of y naught, that's rather obvious. The uniqueness of y naught follows from the vector, follows from the uniqueness of z naught, actually follows from the fact that if y1 belongs to n such that y1 is not equal to y naught and norm of x minus y naught is equal to t, then z is z1 equal to x minus y1 belongs to C, and z1 is not equal to z0, and z0 norm of z1 is equal to norm of z0, a contradiction contradicting the uniqueness of z0। चलो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, उधर मिट फॉलो मैंने कहा ना, contradicting the uniqueness of z0, क्योंकि z0 यूनिक है तो ये y0 यूनिक होगा। So we are done। ये छोटा सा रिजल्ट था जो हमने किया। Now we move ahead। मैंने कहा था हमारा गोल है, we want to show that क्या बोलते हैं, h can be written as m plus m। उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। हम एक और थ्योरम करते हैं कि if m is a proper closed subspace of a Hilbert space H, then there exists a unique non-zero vector। अब ये important theorem है, z0 belonging to H such that z0 is orthogonal to whole of M, यानी it is orthogonal to every vector inside it, and z0 belongs to M curve in other words। मतलब एक वेक्टर ऐसा यूनिक हमें मिलेगा जो नॉन जीरो है, और क्योंकि जीरो तो हर एक के साथ ऑर्थोगोनल होता है, एक नॉन जीरो वेक्टर हमें ऐसा मिलेगा जो यूनिक होगा और it would be orthogonal to every vector inside this subspace। और प्रूफ इसका थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशंस हैं ज्यादा। So let x, अब क्योंकि ये प्रॉपर है, प्रॉपर सबस्पेस है, so let x belong to h minus m, then by and let t be equal to the distance from x to n, which we know is infimum of the distances x minus y, where y ranges over m. So we know that by previous theorem, there exists a unique y naught belonging to M such that t is equal to norm of x minus y naught। Okay, we define z naught to be this x minus y naught, and observe that since d is positive, क्यों d इसलिए पॉजिटिव है बिकॉज x m में नहीं है, पहले तो ये नॉन नेगेटिव होगा, इट इज इनफिनिम ऑफ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो ये जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर जीरो इसमें तभी हो सकता है नॉर्म जब ये जीरो हो जाए, यानी y x के बराबर हो जाए, और y x के बराबर तभी हो सकता है जब x belongs to m, लेकिन x चूंकि m के अंदर नहीं है, so this has to be strictly positive। So d is positive, therefore z0 जो है is a non-zero vector।
क्योंकि ये नॉन नेगेटिव होता है और जीरो तभी होता है जब ये अंदर का वेक्टर जिसका नाम z नॉट हमने कर दिया जीरो। सो नॉन जीरो तो हमें मिल गया ऑब्वियसली। नाउ वी हैव टू शो दैट व्हाट डू वी हैव टू शो दैट we have to show that z naught is orthogonal to every vector for all y belonging to n. That's what we have to show. Now, for any scalar alpha, for any alpha belonging to k, if I want to ऐसे में लिखता हूँ norm of z naught minus alpha y can be written as norm of z naught किसके बराबर है x minus y naught, so it will be x minus y naught plus alpha y, which would be greater than or equal to t, which is equal to norm of z naught. Reason being y naught plus alpha y belongs to m, because of course y naught जो है वो m में है by our supposition, मतलब by our previous theorem, or of course alpha plus y or y m में है, so it is a linear combination of the vectors inside m, so it would be greater than equal to the infimum of x minus y, where y ranges over m. तो infimum चूंकि infimum है in lengths का तो ऐसा होगा, ठीक है। so तो स्क्वायर्स में भी यही होगा, यानी z नॉट माइनस अल्फा y स्क्वायर इट वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ z नॉट स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसमें लगाएंगे इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन, यानी इट वुड इंप्लाई दैट z नॉट माइनस अल्फा y, z नॉट माइनस अल्फा y inner product is greater than or equal to inner product of z नॉट with z नॉट, and this is true for all alpha belonging to I have k, all scalars, and of course y जो है y belongs to m. So it would imply that अगर मैं इसको expand करूँ, this would be z naught plus mod of alpha square into y y। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन तुम इसको आराम से expand कर सकते हो घर पे, no issue. So it would be minus alpha bar into z naught y, then minus alpha, actually plus होना चाहिए कि minus, minus alpha into yz naught is greater than equal to z naught. Now, as you can see that this and this cancels, so what we are left with would be, मैं ऐसे लिखूंगा minus alpha bar into z naught y, या z naught y होगा, z naught पहले है ना हर जगह, yes, ठीक है, minus alpha into z naught y bar। अच्छा मैंने इसको फ्लिप किया तो ये यहाँ आ जाएगा, ये है और वो कैंसिल हुआ, देन आई हैव प्लस mod of alpha square into norm of y square would always be non-negative, तो कैंसिल हो गया, बचा ये हमारे पास इक्वालिटी है। Now if we put, now this is true for all alpha belonging to k, if we put our scalar to be, let alpha be equal to beta into z naught y, this is a number, किसी भी नंबर के लिए ट्रू है, तो in particular this number where beta is an arbitrary real number, तो हर किसी नंबर के लिए ट्रू है, तो in particular this number into some real number, this is some fixed, so this is some real number। तो अगर मैं अल्फा ये लेता हूँ तो you will get माइनस अल्फा बार किसके बराबर होगा, बीटा, तो रियल है तो एक्चुअली होना चाहिए बीटा, चलो मैं लिख देता हूँ z नॉट y का बार into z नॉट y minus beta into z नॉट y into z नॉट y bar plus beta square mod of beta square, चलो mod of beta square into mod of z नॉट y का square
into norm of y square is greater than or equal to 0. So as you can see, beta तो real है, so this should be minus beta, क्योंकि ये खुद अपना conjugate होगा into z0 y का square, a complex number multiplied with conjugated mod z square, minus again same thing, beta into z0 y again square, right? Then I have plus, I have beta square, और क्या होगा, into norm of z0 y का square into norm of y square is greater than or equal to 0. Now this would be, क्योंकि ये और ये तो same है, this should be minus twice beta into z0 y का square plus mod of beta square into z0 y का square into norm of y square. This is greater than or equal to 0, and this is true for all beta belonging to non-real numbers. So now if this is true, I can further calculate it. Now call, denote, let A be equal to this number z0 y का square and B be equal to norm of y square. तो इस we get, अगर मैं इनका नाम थोड़ा, now these are non-negative real numbers, of course these are all now negative, मतलब एक तो real है बाकी non-negative. So I can write it as minus twice beta into A, right? Now A आ गया plus beta square into A into B is greater than or equal to 0 for all beta greater than belonging to real numbers. So this is the sort of inequality I get. So let's call this, इसका कुछ नाम देते हैं equation 1. अब इस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे. तो what was it? चलो फिर से मैं लिखता हूँ. चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. चलो क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है. It implies that beta A into beta B minus 2 is greater than or equal to 0. तो इसको 1 लिखते हैं. For all beta belonging to R. तो ये situation होगी. So let me write it as यहाँ पे beta A into beta B minus 2 is greater than or equal to 0 for all beta belonging to R, where A is equal to z0 y का inner product का square and B is equal to norm of y square. So that's our situation. Y belongs to M and z0 is some vector, right? That does not belong to M. So once I'm done there, now if A is positive, अब देखो A क्या हो सकता है? A is a non-negative real number, या तो ये this is greater than or equal to 0, है ना? Now if A is positive, A positive है, right? Then let's call this equation 1 जो पिछले पेज पे लिखी थी मैंने, लेकिन repeat कर सकते हैं, यहाँ पे नजर रहेगी. Then 2, then 1 is obviously wrong. Obviously wrong. Why? For sufficiently small. For sufficiently small positive beta. ठीक है ना? यानी अगर मैं लेता हूं, देखो this has to be positive, right? अब अगर A पॉजिटिव नंबर है और B को भी मैं पॉजिटिव करता हूं, देखो तो अगर मैं लेता हूं बीटा माइनस B माइनस 2 को नेगेटिव, यानी बीटा को लेता हूं मैं -2/p, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, और बीटा को मैं पॉजिटिव लेता हूं. यानी अगर मैं बीटा, मतलब दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स,
तो अगर मैं बीटा लूं कोई नंबर विच इज पॉजिटिव बट लेस देन 2/p, देन क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, इन पर्टिकुलर फॉर बीटा विच इज बिगर देन 0 बट लेस देन 2/b, right? And by the way, 2/b is a non-negative number, so I can find this number for a non-zero vector inside M. So अगर ऐसा है तो इससे मुझे क्या मिलेगा, एक तो बीटा पॉजिटिव है, गुड, और दूसरा बीटा बी जो है वो -2 जो है वो नेगेटिव है। अब अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, और चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, बीटा इज पॉजिटिव बट लेस देन 2/p, तो इट वुड इम्प्लाई दैट बीटा इज पॉजिटिव, गुड, and beta b -2 is negative, है ना? तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर। सो ये रॉन्ग होगा। तो sufficiently small बीटा अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ लेकिन sufficiently small means less than 2/p, then this is obviously wrong, hence a must be 0। a पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये तो नॉन नेगेटिव है तो ये 0 होगा, which means that z0 y should be equal to 0 for all y belonging to M, which and we are done। तो हमारा हो गया ये रिजल्ट। तो सो फार हमने क्या दिया कि अगर कोई सबस्पेस है तो यू कैन फाइंड ए यूनिक z0 such that it is orthogonal to every vector of M। सो ये हमारा दूसरा हो गया। अब दूसरा थ्योरम मैंने बोला ना हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दूसरा इसका कनेक्शन ये होगा, if M and N are closed linear subspaces such that M is orthogonal to N, and every vector of M is orthogonal to every vector of N, then M plus N is also closed subspace। तो है ही, यानी it's a closed subspace। In particular, चलो वो नेक्स्ट करते हैं अलग से, पहले हम इतना करते हैं, उनको हम पीसेस में इसलिए कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो बात। सो पहली तो ये है कि if M and N are subspaces, then their sum would also be a subspace. That is rather obvious. The question is to show that closed. Now to show that M plus N is closed, I don't know ये होगा कि नहीं, तो हम इसके एक लिमिट पॉइंट लेंगे और दिखाएंगे वो इसको मतलब इसके अंदर होगा, इसका हर कोई लिमिट पॉइंट ये कंटेन करेगा। Let Z be a limit point of M plus N, and since we are living inside a metric space, it implies that there exists a sequence Zn contained in M plus N such that Zn converges to Z as N approaches infinity. We have to show that Z belongs to M plus N. Okay, so but Zn can be written as Zn is some of this type where Xn belongs to M and Yn belongs to N, because Zn जो है it belongs to M plus N, right? Okay, so once I'm done that, चलो पहले मैं ये लिखता हूँ, मतलब उतना भी ये एक्यूरेट नहीं है, unless they are mutually disjoint, वो मुझे लिखना चाहिए था। चलो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, that's better। Now since तो क्योंकि यूनिक रिप्रेजेंटेशन तभी होगी जब M और N जो है
उनमें खाली 0 कॉमन होगा, मतलब 0 तो कॉमन होगा ही सभी सब स्पेसेस में, और मतलब अगर दो सब स्पेसेस में मतलब 0 कॉमन नहीं होगा, देन दैट कैन नॉट बी रिटन यूनिकली इन द फॉर्म ऑफ द सम। ये तुम करते हो अलजेब्रा में आई थिंक। नाउ बाय असम्पशन, सर अगर उसमें 0 नहीं होगा तो वो सब स्पेस मत होगी। नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि m इंटरसेक्शन n, देखो जब मैं हूं ना m प्लस n के एलिमेंट्स, राइट, सम के एलिमेंट्स, तो सपोज z बिलोंग्स टू m प्लस n, राइट। अब इसमें दो चीजें कॉमन है, मतलब यहाँ पे x भी है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हाँ, x है, यहाँ पर भी x है, देन z कैन बी रिटन इन, सपोज z को मैंने लिखा किसी तरह से u प्लस v, right, then z can also be written as u minus x plus v minus x, because x x cancel हो जाएगा ना। जी सर, मैंने गलत लिखा है एक्चुअली, x माइनस x x कैंसिल हो जाएगा, गलत लिख रहा हूँ, तो इसको रब करते हैं। मतलब हम इसको देखो, अगर इनमें कोई नॉन जीरो वेक्टर कॉमन है, देन इफ z कैन बी रिटन एज u plus v, then z can also be written as u plus x plus v minus x, लिख सकते हैं ना, क्योंकि x भी यहाँ पे है तो माइनस x भी यहाँ पे है, x यहाँ पे है, so x x so this representation cannot be unique unless ये x 0 हो, यानी इनमें सिर्फ m इंटरसेक्शन n खाली का खाली 0 एलिमेंट, अदरवाइज दिस कैन नॉट बी यूनिक। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ बाय असम्पशन, अब यहाँ पे हमारे पास फायदा ये है कि m जो है वो ऑर्थोगोनल है टू ऑल n, which implies that m intersection n जो है उसमें खाली 0 हो सकता है, क्योंकि only 0 can be orthogonal to itself, और तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों में जो एलिमेंट होगा it has to be orthogonal with itself, because every element here has to be orthogonal to every element here. अब अगर कोई कॉमन है it has to be orthogonal to itself, and only 0 can be orthogonal to itself. So once that is the case, तो ये x खाली 0 हो सकता है, 0 का मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होगा, यानी you would have a unique representation. So therefore every zn belonging to m plus n can be uniquely written as zn is equal to xn plus yn, where xn belongs to m and yn belongs to n. So by this way I get two unique sequences. So therefore xn is a sequence inside m and yn is a sequence inside n, right? Okay, and by Pythagoras theorem जो हमने किया था, that's a version of parallelogram law for perpendicular vectors. I should have zn minus zm in norm square can be written as xn minus yn plus zn minus z, oh sorry, गलत मैंने लिखा ना शायद, should be xn, वो फॉर्मूला मुझे लगता है शायद ये अभी कटेगा, कोई बात नहीं, हम इसको, चलो मैं काटता हूँ, फिर से लिखते हैं, फिर से शुरू करते हैं, इसको करते हैं क्योंकि लेस देन 1 मिनट है।